the state of Rajasthan in India, people worship many folk deities. The hero Pabuji is one such deity, worshipped largely by the shepherd community known as Raikas or Rabaris. महाराज पाबूजी को हमारे राजस्थान में सब मानते हैं। जैसे एक रेबारी जात के हैं, खास करके रेबारी रायका, ये जो हैं ये अपने लक्ष्मी यानी वो पशु जो है इनको ये लक्ष्मी मानते हैं। ऊँट हैं, बकरियां हैं, भेड़ हैं, तो इनके लिए तो महाराज पाबूजी बहुत ही रक्षा करते हैं। जैसे इनमें कहीं बीमारी आ गई है तो ये महाराज पाबूजी की मान्यता करके और उनका धूप ध्यान अगरबत्ती करके एक कलश बनाते हैं पानी का, उसके अंदर उसकी ज्योति की वो राख डाल करके अगर उन पशुओं के अंदर अपना चांटा मार देते हैं तो पाबू के प्रकाश से उसकी बीमारियां दूर हट जाती है। ख़ास तौर के ऊपर तो ऊँट के लिए तो हमारे राजस्थान के हर आदमी महाराज पाबूजी को मानते हैं। ठीक है, गौ रक्षा भी ये करते हैं, शुरू से ये गौ रक्षा ही करते आए हैं और वैसे मर्यादा वाले भी थे। तो हर बीमारी के अंदर भी महाराज पाबूजी ने लोगों की रक्षा की। Pabuji is worshipped during an all-night ritual called a jagran, in which priests known as bopas play a fiddle-like instrument called the Ravan Hatha. The bopa also sings along with a female performer, usually his wife, known as the bopi. They recount the epic tale of Pabuji's life for his worshippers in front of a large painting called a par. The par documents the life and deeds of the hero Pabuji. Pabuji is the hero of the story. He is born in the village of Korlu in Rajasthan in a field of saffron. He grows up without his mother and ascends the throne of Korlu. His mother reincarnates as a black mare called Kesa Kalmi in the court of the Charan lady Devil. Devil allows Pabuji to ride Kesa Kalmi on the condition that he will always be close at hand if her cows are in danger, particularly from her evil neighbour Jindrao Kinchi. Pabuji has 4 loyal companions. They come from both high and low castes. During the wedding of his niece, Pabuji promises her she-camels as a gift. Realising that he must honour his promise or disgrace his niece, he marches to Lanka along with his friends to round up the she-camels. He kills Ravan, the 10-headed king of Lanka, and retrieves the she-camels, thus introducing them to Rajasthan for the first time. On his way back to Korlu, he passes through Umakot, the kingdom of the Sodhi Rajputs. Fulvanti, the Sodhi princess, falls in love with Pabuji at first sight, and he agrees to marry her. During the ceremony, Devil the Charan lady appears in the form of a bird with the news that Kinchi has stolen her cows. Despite the protests of his new bride, Pabuji leaves the ceremony midway along with his trusted lieutenants to retrieve Devil's cows and keep his promise to her. However, during the battle with Kinchi, the two come face to face and Pabuji is killed, even as he and his lieutenants successfully retrieve Devil's cattle. Pabuji becomes a martyr and ascends to heaven on a palanquin. The main Pabuji temple is in the village of Korlu in western Rajasthan. At the temple, morning prayer is performed for Pabuji every day.
Babuji's importance is among the communities who had something to do with the keeping herds of especially camels and sheep and cows. यारो हिंदू पतरा जो जी चढ़िया सांझ तो बाड़ते दिन तो अंत ते जाना सन्नी आंगेरा ला कोड़ू मन्नू पाप जी जुग जाने निशाओ जान कुंड वो कसर घोड़ी ओ छाड़ बन जाने येरी ने घेरी कभी कभी तो हैंद्रू बा एक मिनट बूंदी कोटा झगड़ो यो जो हैंद्रू बा दौड़ी और कैसे कान में घोड़ी ऊपर दौड़ी बात दजा फरूक दी सी जो वो आदमी ने 100 बैंड आदमी ने शुरू निकल गई फसे बात आठवीं आई आतुन उगुन निकली जानो क्यों है वाकई में सही उठे जिन्हें अभी इन दारों से आज 100 बरा का कोई हाँ 100 बरा पहले पाबू जो माना राई का पाबू जी नहीं दावा ज़्यादा कर बाबूजी रक्षा करे हमारे एक तो भेड़ बकरी की एक ऊँटड़ों की ठीक है अगर बाबूजी कोई मारे ताव तब हाजमा दो मारे रक्षा करे बाबूजी अन्य बात तो मैं बाबूजी ने मानो हमारा देवत है हमारी मदद करते हैं बार बार कोई मतलब मवेशी में दुख आ जाता है कोई मान लो कभी लड़ाई टंटा होता है भीड़ पड़ जाती है तो साथ देते हैं सबको रखता है हमारा शरीर को जाता भी रखता है बड़ा की पूजना है तो वो भी रक्षा करते हैं हमारा भी गया ये जानवर भी बाल बच्चा के सुनते रहे हमारा खोल देगा एक असल गोली काल में ये ना भील नायक ये नीचे कोरियोड़ा है Nathuram Bopa carries his own par and Ravanhatta, as all Bopas do. He waits with his wife Sujna Bopi for the bus that will take them the 100 kilometres from the city of Jodhpur to the village of Barunda, where there is to be an all-night Jagran. The Jagran will take place in the courtyard of a Raika shepherd's house. All of Pabuji's disciples from the village begin to gather. As darkness falls, the Jagran begins. The Pabuji epic contains many events that are selectively sung by the Bopa and Bopi, as the entire epic would take up to 36 hours to recite. After singing each stanza, the Bopa gives a spoken explanation known as an artav. He explains the event that has occurred,
while pointing to the relevant section on the po. A member of the audience, known as the hukara, calls out the last word of each line of the atau, thus completing the bopa's sentences. This conveys audience interest and gives encouragement to the bopa and bopi. Along with the Raika men, the Raika women also attend the Jagran. As well as being a religious event, the Jagran is also a form of genuine community-based entertainment. Although the Jagran runs all night, there are regular tea breaks both for the audience as well as the performers. By practice, the bopi sits away from the crowd during the breaks. As the Jagran continues, the children fall asleep and are wrapped in blankets from head to foot to protect them from the cold air of the desert night. By morning, after more than 12 hours of performing, the bopa and bopi sing the final prayer. भारत में
Once the Jagran is over, coconut is handed around amongst the audience as a blessing from Pabuji. देवतरूपी चीज है पर अब इन पगम गुंदान तो भी कुपाए तो अब ये घंटी रहे नी थोड़ा लो घणो लो. Finally, there is a ceremonial partaking of opium amongst the Raika men. They drink from each other's hands as a sign of brotherhood. Although the Jagran has a rich heritage and can be traced back to the 17th century, today the practice is under threat. The patrons of the Bopas, the Raikas, are increasingly being forced out of their traditional profession of animal herding. चारागाह की कमी है. चारागाह की कमी के कारण जानवरों को रखने की यहाँ राजस्थान के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए फिर बाहर ले जाना पड़ता है इनको. बाहर एमपी है, यूपी है, उधर साइड जाते हैं. उधर जाते हैं तो वहाँ भी इन लोगों को चरने के लिए ना तो पूरी जगह मिलती है और फिर इंसानों के लिए भी वहाँ खतरा रहता है. हर समय बंजारे हैं, डाकू लोग हैं, ये लोग इनका पीछा करते हैं तो इनको खूब लूट मार होती है. कई बार इंसानों को ख़त्म कर दिया जाता है, कई बार जानवरों को लूट के ले जाया जाता है. और फिर गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है कि ज़्यादा कुछ होता ही नहीं पूछताछ, और ना इन लोगों को इतना नॉलेज ही होता है कि सरकार में कुछ कहें जा कर के या कुछ वार्ता करें तो इन्हें पता नहीं रहता. तो खूब लूट जाते हैं, फिर अच्छा नहीं रहता. तो ऐसा करके ये लोग फिर परेशान हो जाते हैं. परेशान होकर के कई लोगों ने तो अपना खानदानी पेशा छोड़ना ही शुरू कर दिया. Much of the land that was earlier designated as common grazing ground for animal herders, such as the Raikas, has been taken over by agribusiness and other large commercial concerns, such as limestone mining. पहले तो क्या होता था, बाबूजी की पड़ हर साल अपने अपने गांवों में लोग बचाते थे. तो उसको क्या है, भोपा लोग आते थे ना बरसात के दिनों में, सभी लोग एवड़ वगैरह वहाँ इकट्ठे होते थे तो अपनी चौपाड़ के ऊपर उसको पड़वाया करते थे. तो खूब उनको धान वान घरों में होता था, खूब कपड़े लत्ते पैसे वैसे खूब दिया करते थे. अब उनके खुद के पास ही कमी आने लगी है तो वो कहाँ से देंगे. तो फिर वो पढ़ने वाला जो आता है भोपा लोग, उनको कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो पढ़ने क्यों आएगा. Many of the Raika women now work on the construction sites that are mushrooming all over rural Rajasthan. अभी दोरो रात में कुछ चरे कटे जमी कोनी चरे कटे तो बात जमी कटेगी. अब कटेगी, लोग दाब लीजन अब कटे. Now, Babuji was important in their animal life when they were having animal life, but nowadays they hardly have life with their cattle and camel. So definitely that role of Babuji is decreasing massively. And Bhopa was important with Babuji's only, and Babuji's role in their practical life and making living is decreasing. So Bhopas find very difficult to get the performances within the community because I have no camel, I have no sheep. Although yes, I have a respect and I have feeling for Babuji, but I cannot afford anymore. I have no camel to heal, or I have no sheep to heal. But yes, I have feelings. I get some money, then I can invite, otherwise I not. I'm not anymore obliged to a Bhopa to give him money and food and clothes, which my father was.
With the gradual disintegration of the village society and its replacement by a market-driven system, the cultural artefacts of rural life find no place in the new order. आजकल हर जगह टीवी हो गई है, हर जगह ये रेडियो हो गए हैं, कहीं पे बैठ के आप सुन सकते हैं, गा सकते हैं। बहुत से ऐसे कलाकार हो गए अच्छे अच्छे भजन गाना शुरू कर देते हैं। तो अब बाबूजी के पड़का पीछे रहना यही कारण है कि हमारे पास पुराने ढंग के साज हैं, पुराने ढंग के लिबास हैं, और गाँवों के अंदर सिवाय रेबारी के सिवाय और वो बात नहीं रह गई है। इसलिए भोपाल लोगों ने भी समय के परिवर्तन के हिसाब से कुछ बच्चे पढ़ लिख गए हैं, तो अब वो ये नहीं चाहते कि हम गांव-गांव घूमें, गांव-गांव जाएं। वो अब तो यही कहते हैं, बोले क्या है बाबूजी की पढ़ थी कभी थी, और अब है तो है। जैसे मेरे वंश में कोई पढ़ नहीं बाँचता है, वो सब बच्चे पढ़ लिख गए, बहुत से नौकर हो गए, अपने घर पे काम करते हैं, मजदूरी कर लेंगे लेकिन पढ़ नहीं बाँचेंगे। अच्छा, स्थान के ऊपर तो बाबूजी के जाते हैं, बाबूजी को मानने वाले सब मानते हैं, आज भी मानते हैं, लेकिन बहुत कम है। इसी का यही कारण है कि हम बहुत कम मिलते हैं। वो पे कुछ साल के बाद आपको नहीं मिलेंगे। संटी में घोड़ा पर श्री दारा जी नहीं राह जी Kalu Ram is a Bopa who works at the famous Marangarh Fort in Jodhpur. He plays his Ravan Hatha for the tourists that visit the fort. Devi sai sajalai raji e sammela sri dara o tari lichi mana banna devi sai. Bopas are fast losing their rural patronage, and the all-night Jagran, in which the female Bopi is an integral part, is rarely held today. Some Bopas are able to survive working in the tourist sites and restaurants in the urban areas. An artificial image of the Bopa as a colourful, itinerant folk performer is being used to market various enterprises. वहाँ तो जाते हैं, वहाँ तो क्या आया कि आप शरीर के पदार्थ है ना सा, तो बाकी तो 2 मिनट रुकोगे, कि 5 मिनट रुक जाओगे, बस बाबा आ गया, ठीक है, पट ये ताली बज गई, बहुत अच्छा किया बाबा, बहुत अच्छा किया, बस। The new patrons they find are the tourists, especially the Westerners. They are the new patrons and they make their living. But the new patrons give them money not because they feel they obliged that they are the patrons, but just their role, Bhopa's role is like a beggar. So here we find a sort of shifting of ground, shifting of the role of the traditional folk entertainer and the traditional folk entertainment forms. Here it becomes a sort of single-dimensional thing. Earlier it was a 3-dimensional thing. Now it is coming to a sort of alien and ignorant audience, just as a sort of spectacle, as a sort of exotica, something which is not a part of everyday life and experience.
Kesa Bopa has not learnt the Pabuji epic. His father was a well-known Bopa who performed Pabuji Jagrans all his life. Kesa makes his living playing for tourists at a 5-star hotel in the city of Jaipur in Rajasthan. He lives in an urban slum nearby. This name, sir, this name Kesar. Oh, good Rajasthani Kesar. Thank you very much. One country, sir, Jodhpur. Oh, very good Jodhpur. This Rajasthani song, this name Gorban. Okay. अत्ता करके वो नोट मिला दिया, मेरे को उठाया गोदी में, जैसे गेंद उठाओ जैसे मैं खड़ा हो गया, खड़ा कर लिया मेरे को। दिस माई फ्रेंड, दिस माई वेरी गुड राजस्थान केसर गुड। अब तो आने पीटी है, दिस माई टेम, दिस माई गोइंग। मैं क्यों ओके सर, थैंक यू सर। फिर बाजा में मैं ऐसे करता था, मैं क्यों हेलो, टाटा, तो बोला गुड गुड। फिर हमारा अफसर बोला केसर आप मज़ा ले गए ग्रुप के। मैं साहब ग्रुप का क्या, मैं ये पेट है, मज़ा कुछ नहीं, ये पेट कराता है सब कुछ। ये पेट नहीं हुआ सबका तो कुछ नहीं है, ये पेट ही भगाता है और पेट ही रोटी मांगता है। और यही सुबह पहले जल्दी हुई जाओगे तो खाओगे, नहीं ये पेट भूखा मरेगा। Kesa Bopa's older brother, Suraj Bopa, once performed Jagrans, but now plays for tourists at the Amir Fort, 11 kilometres from Jaipur. हम तो बस ये बजाते हैं, हाथों के संग संग चलते हैं। अब मेरी तो ऐसे समझ लो कि चला नहीं जाता ऐसी घाटी के अंदर, तो सुबह सुबह मैं चलता हूँ, धीरे 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 हाथी चलता है, बीच के संग चला जाता हूँ और वही पेड़ियों के अंदर बैठ जाता हूँ। शाम की 5 बजा के मैं आता हूँ। अब जो तमाम जैसा कोई दे जाता है, 5 से ही दे जा, 100 ही दे जा, 10 ही दे जा, 50 ही दे जा, हम किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं कि हमको दे के जा, दे जाओ तो ठीक, नहीं जाओ। फ़ोटो भी खींचते हैं। और ये हिंदुस्तानी भी आते हैं बाहर के, वो भी सुनते हैं, दे भी जाते हैं। अब आजकल हमारी पूछ नहीं है। Rustic images of folk art and artists are being peddled to the wealthier classes in the big Indian cities as well. Hazarilal Bopa, originally from Rajasthan, now lives in New Delhi. He is employed to play his Ravan Hatta outside an upmarket restaurant complex. ये यहाँ काम करना तो अच्छा ही लगेगा। शुरू में तो हमारा को भी अच्छा नहीं लगता था यहाँ, पर माहौल दे के काम करना पड़ता है, तो माहौल दे के काम करना भी चाहिए। एक जगह पार भी तो नहीं पड़ती है। जैसा माहौल देखने पर काम करेगा तो अच्छा रहेगा वो। अब हम भी वो तो पुराने लोग थे, चलो उन्होंने तो अपना हिसाब किताब कर दिया, अपनी सदी बदलती जा रही है समय के अनुसार, तो समय के अनुसार भी तो चलना चाहिए। वो तो अपना पुराना हिसाब किताब लिए बैठे, अपना जो हम लोग हैं, जो हमारी औलाद होगी तो वो भी हमारे से आगे जो होगा तो उसके हिसाब से चलेंगे वो भी। वो तो ऐसा है कि वो तो वहाँ ही है, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। उनकी टाइम से अच्छी थी और उनका गुजारा चलता था बहुत अच्छा। पर अब हम लोग हैं तो हमारा तो अब देख के काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आए हुए यहाँ पे आए हुए करीब 9-10 साल हो गए हमें। Every day, Hazarilal, along with a fellow Bopa, performs a mix of popular film songs in bursts as restaurant patrons come and go. Often they bring a young child from their family to dance and provide a further novelty to their act. हाँ, असली कहानी कौन समझता है? कोई समझने वाले समझेंगे वो तो। अब तो वो चल गया, डिस्को चल गया, वो इंग्लिश गाना चल गया। कोई किसी की गाड़ी में देखो इंग्लिश कैसेट मिलेगी, राजस्थानी कैसेट किसी के पास नहीं।
ये ड्रेस पहनने से हमारे को लोग राजस्थानी बोलेंगे। अगर हम इसी लिबास में जाएंगे तो हम राजस्थानी नहीं, लोग बाग ऐसे देखेंगे जी ये राजस्थानी का ड्रामा कर रहे हैं, ये राजस्थानी नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो पिछली नकल दिखानी पड़ेगी, असली नहीं है तो थोड़ा बहुत नकल तो दिखानी पड़ेगी ना। और यहाँ पर लोग बागों को थोड़ा समझ में फ़र्क हो गया। वहाँ का लोग तो वहाँ समझते थे तो भाई ये हमारा ये भोपा है, यहाँ पर कोई हमारी जात पात कोई जानते नहीं लोग। यहाँ पर तो जानते जी ये राजस्थानी है, इसके सिवा और कुछ नहीं जानते। वहाँ पर खुश होते हैं या इतना यहाँ पर खुश नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ पर खुश हम ये ऐसे रहते होते हैं कि वहाँ पर जो हमारा सुनता है ना वो सब लोग खुश हो जाते, बच्चे से लेके बड़े तक वो खुश हो जाते। तो इसलिए वहाँ पर हमारा को ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जब जनता खुश होगी ना तो प्रोग्राम वाला भी बहुत ज़्यादा खुश होगा। यहाँ पर ऐसा ना कोई लोग नहीं सुनेंगे तो चलो जी नहीं सुने तो कोई बात नहीं, हम तो हमारा खुश हैं, गा रहे हैं हम हमारी। Torn from its social and cultural context, what will survive from the recital of the Pabuji epic is the dress, the instrument, and perhaps even some of its musical notation. What will be lost forever is the rich layering of the performance, the community participation it inspires, and most importantly, its practical meaning for Pabuji's people. होती रखवा जे